Hello students, now we discuss about advisory bodies. Then first one is BOT, Board of Trade. This was set up on May 5, 1989 under the chairmanship of Commerce and Industry, Minister with secretaries of Ministries of Commerce and Industry, Finance, Textile, External Affairs, Chairman of ITPO, Presidents of FICCI, एसोचैम आता है, CII है, FIEO है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं ना. And others to provide a forum for ensuring a continuous dialogue with trade and industry in respect of major developments in field of international trade. The board carries out a review of export performance of various sectors. ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू करी जाती है. देन आइडेंटिफाइज कॉन्स्ट्रेंट्स, जो कुछ बैरियर्स होंगे, बाधाएं होंगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. एंड सजेस्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स टू बी टेकन बोथ बाय गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री. ओके, किसको लेने हैं स्टेप्स? गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्री को भी. कंसिस्टेंट विद द नीड टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स. तो हम क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट तो ज़्यादा हो पर इम्पोर्ट कम होना चाहिए ना. द बोर्ड ऑर्डिनरली मीट्स एट लीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर एंड मेक्स recommendations to government on issues pertaining to its terms of reference. ठीक है, तो ये हो गया BOT. देन इंटरस्टेट ट्रेड काउंसिल under the Ministry of Commerce was set up on June 24, 2005 in order to ensure a continuous dialogue with state governments and union territories. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी और यूनियन टेरिटरीज होंगी और इंटरनेशनल ट्रेड. It is a permanent advisory body headed by Commerce and Industry Ministry or Minister of Country, which meets at least once in every 6 months. ओके, 6 मंथ्स में एक बार ही मीटिंग होनी चाहिए. एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रेड फैसिलिटेशन एंड टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग स्टेट्स पार्टनर्स इन इंडियाज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एफर्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स. इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस है to identify impediments that affect export adversely, जो बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं ना, मतलब कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट को. देन टू इवॉल्व यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन. यहाँ हम बात करें कि सभी राज्यों में ना सेम ही प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. ओके, एक जैसी होनी चाहिए. देन to create a framework for making states partners in India's export effort. Then to identify issues related to state governments in regard to WTO capacity building. WTO क्या है? World Trade Organization. ठीक है, infrastructure development and creating an overall supportive policy. Overall supportive policy and fiscal environment for international trade. Then to commission studies in furtherance of the above objectives and जो any other related issues होंगे वो भी डील करना. ठीक है, फिर हम बात करते हैं अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस की. फर्स्ट वन इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज DGFT. तो डायरेक्टरेट होगा इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जिम पॉलिसी. एग्जिम पॉलिसी पढ़ी है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the main objective of promoting India's exports.
In addition to this, DGFT is also responsible for issuing licenses to the exporters and to monitor their export obligations. The Directorate has its headquarters at New Delhi and has a network of 35 regional offices in almost all states and union territories of India. The regional offices are located at Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Bhopal, Chandigarh एंड चेन्नई. ठीक है, तो ये कुछ मतलब स्टेट्स हैं जो आपको याद करने हैं. ये 35 दिए गया ना, ये वाले. तो यहाँ देखिए, देखो हरियाणा में से कौन सा है, पानीपत है. ठीक है, एक न्यू दिल्ली हमको याद रहेगा. तो अगर अपने हरियाणा की बात करें तो न्यू दिल्ली आ जाएगा. देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, DGS and D. Directorate General of Supplies and Disposal is headed by Director General with its headquarters at New Delhi. It has 3 regional offices located at Chennai, Kolkata, Mumbai. तो ये याद कर लेने हमने सारे. ठीक है, कुछ में सिमिलर ही हैं बट फिर भी स्टेशंस याद करने हैं ध्यान से. It is the executive arm of the supply division of Department of Commerce for determination of rate of for common user items, procurement of stores, shipment and clearance of imported cargo. Then Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, that is DGAD. The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, inaugurated in April 1998, is responsible for carrying out the system of investigation of dumping. डंपिंग पढ़ा है ना, जो हिंदी में एक टर्म आती थी राशिपातन. एज वेल एज सब्सिडीज केसेस. द Directorate is headed by the designated authority of the level of Additional Secretary to the Government of India, who is assisted by a Joint Secretary, Advisor, Additional Economic Advisor. ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे. Then Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, DGCI and S. तो this acts as a primary government agency है for the collection, compilation and publication of foreign, inland and ancillary trade statistics and dissemination of various types of commercial information. The Directorate is headed by the Director General with its head office located at Kolkata. The Directorate brings out